Welcome back. It started with Uttar Pradesh and quickly caught the fancy of other chief ministers. Bulldozers raising properties of accused makes for great TV, great headlines as well. But in the rush to deliver bulldozed justice, does justice get bulldozed instead? Now, this is what the family of Ankita Bhandari is alleging, and this is the issue that we are raising tonight on Urban Debate as well. Ankita Bhandari's father has questioned the BJP government's move to raise down a part of the accused's resort, which is Pulkit Arya's resort. He's saying that the demolished part could have had crucial evidence which has been lost. Authorities are, of course, denying this charge. They are saying that forensic teams have safely collected all evidence before the demolition. They are saying the rooms have been videographed as well. Now, the grieving father has remained unconvinced. He has accused the administration of apathy when he first went to file the complaint. He claims the cops did not want to file a complaint. He was made to sit for nearly 3 hours, after which finally a complaint was registered. He is alleging that the police is working on directions of the accused. Meanwhile, the murder of the 19-year-old girl has snowballed into the biggest political controversy in the hill state of Uttarakhand, considering that the accused is the son of a former BJP minister and senior leader Vinod Arya. Earlier today, former Uttarakhand Chief Minister and Congress leader Harish Rawat met with Ankita's father, and Harish Rawat later said that a VIP was scheduled to visit the resort and Ankita was being forced to service that person, which is why possibly the death happened. कि किसके आदेश पे तोड़ा गया। अच्छा, आपका सवाल है कि किसके आदेश पे तोड़ा गया। अच्छा, और आपने रिजॉर्ट में क्या क्या देखा आपने? जी, वो तारें टूटी हुई थी, जगह जगह से टूटी हुई थी, और जो मेरे लड़के का बैग था वो बैग वैसे ही पड़ा था, उसमें एटीएम भी है उसमें, पर्स के अंदर, और करीब करीब 4-5 हज़ार उसके जेब में, उसमें वो घर ही से ले गई थी, उसके पैसे सेफ थी। और हाँ, एक और है जो है कि 18 तारीख को 8:30 बजे के बाद जब उसका स्विच ऑफ हो गया था, तो ये लोग उसको बाहर ले गए, 4 लोग, पुनीत आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित नाम का एक, चारों उनको बाहर, क्योंकि हमारे पास वीडियो है, तो तीनों लोग मेरे लड़के को बाहर ले गए। और जब 10:30 बजे के आसपास जब ये अंदर आए तो लड़की मेरी वापस नहीं आई। मेरी मांग यही थी कि जो मेरी बेटी है पहले उसकी रिपोर्ट आ जाए, फिर उसका देह संस्कार होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मेरी बेटी दिखाई नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। उसके बाद उन अपराधों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए उनको, बस। माता जी, एक और सवाल कि ये बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है वहाँ, उसे मुझे क्या पता, मैं ना वहाँ गई ना मैंने वहाँ देखा, उसके बारे में मैं क्या जानूँ, ना तो मैं वहाँ गई। 4 दिन गिरफ्तारी में लगा दिए, 7 दिन बॉडी रिकवर करने में लगा दिए। अब भी एक मोबाइल कहा जा रहा है जो पानी में गिरा है वहाँ, उसको पुलिस ने टेस्ट नहीं किया है और जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन पुलिस अभी तक रिमांड नहीं ले रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं। पोस्टमार्टम में महिला डॉक्टर शामिल नहीं है। उनके पिता की आशंका है, डर है कि उसके प्रभावशाली पिता जो है, जब उनके सामने ही कोशिश करके साक्ष्य नष्ट कर रहे थे, तो आगे वो साक्ष्य नष्ट कर देंगे। मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी नहीं मिल पाएगी, सजा नहीं मिल पाएगी। जहाँ साक्ष्य हो सकते हैं उसको जो है बुलडोज करने में, बुलडोजर से गिरा देने में आपको कुछ भी मिनट नहीं लगते हैं। Let me go across to our guests who are joining us this evening. Suresh Joshi is the spokesperson of the Uttarakhand BJP. We have Tanmi Purti, who's a political analyst. Yashwardhan Azad is a former IPS officer. And Talish Ray is an advocate. Yashwardhan Azad, you've seen the entire sequence of events as they have played out in Uttarakhand as far as Ankita is concerned. Has this bulldozer justice become a headache? Is the fear justified that in the haste to create headlines and look good, the BJP government in Uttarakhand may have possibly destroyed crucial evidence in the case? Well, the whole system is based on a complete weak kind of an edifice. I mean, these are just acts which are in continuation of that theme. I'm so shocked and horrified by this incident. I've been to Uttarakhand so many times. I've seen these illegal resorts. They have been there throughout. And every regime, today the politicians who want to score some points here and there,
They were a part of that system. And you know, Shreya, the worst part is that in Uttarakhand, where policing has been delegated to the Patwaris, because it's the Patwari who registers a case of, Gumshudgi, that is a missing person. What can you expect? In Uttarakhand, High Court had said to bring a proper policing system, and they have not done it because of some babus and some netas who oppose. Now, coming to your question, the sanctity of the case property as per the 451 CRPC is something which every prosecutor, every policeman knows. So destruction of the evidence using a bulldozer trying to show your authority is something, a heinous crime, I would say. You have seen in abroad and you see in television, in many of these Netflix series, wherever there's a scene of crime or something related to that, how sort of make a perimeter it with things and see that nobody disturbs it. But here, there is just no rule of law. Second thing, there are other more heinous things which have happened, Shreya. The police remand was not taken. Those criminals, these killers, straight away went to the jail. Now, the most important thing is the evidence which you're getting in the room is the supportive evidence, electronic evidence, from diaries, WhatsApp chats, and things like that. But the actual evidence is from the spot where she was pushed, where the grass has been, uprooted, whether it's the matching with the foot, where was the point of impact, where was the point of collision, what was the time, what happened, what is the time of death, and matching it. There's so many things which you would have got that particular time when you had arrested. Today, I don't know whether they're trying to get the remand again or not. Maybe they are, but it's already too late. Thirdly, there are so many other things. The chief minister, and I don't doubt his intent. In fact, I would say, Shreya, that CM has a very good IPS officer who's his OST, a principal secretary, who will do a great job. And a kind of SIT has been formed where Renuka, who's a DIG, is in charge. But the point is, the system which does not react immediately because of the local politicians. Today, what has happened is that the power of democracy has been shifted from the people to these lumpen netas who try to dispense justice. And that is the window where the action needed to be done. Now, when that window gets finished, it's late, it's 10 days. The court, for example, Shreya, the most important thing is, will go by evidence. It will not go by emotions. Hum saza dila denge, hum aage badhenge, hum kuch nahi hai, sab kuch ukhad denge. That is not the way. And I tell you, I'm so depressed and affected by this. 19 years old, even younger than my own daughter. What aspirations, dreams. She's working as a receptionist. And look at the father, with what grace he's still talking. And today, my last point, Shreya, is that the resorts across Uttarakhand are basically illegal. And I'll tell you, I went to one of the resorts, the Jim Jungle, one of the finest resorts. And the owner was complaining that the resorts around who are violating everything, including the sound, including everything, and they're right on the Corbett Park. And this is happening. I wrote a letter to the chief secretary, to the DGP, to the forest chief. I did not get a reply. If this is the state of affairs, you can imagine. God help the evidence. And I just pray to God that Ankita gets justice. You have raised some important questions. I want to ask my producer if Suresh Joshi, spokesperson of the Uttarakhand BJP, is through with us or not. All right. He's supposed to be on the show. He has questions to answer. We have many questions for him. But it seems that we have not managed to patch him. I don't know whether he is joining us on the show or not. I hope he does. I hope he does, Tanvi Purthi. Because there are questions all of us have. Absolutely. Was Good the evening, administration, hi, good evening. Was the administration trying to hide something? Harish Rawat, the former chief minister of Uttarakhand, has made some very serious allegations. I don't know whether they are true or not. I don't know whether he's kite flying or not. But he's made serious allegations. He's saying the bulldozers reached the resort for a reason.
There is evidence there which the administration and the political dispensation may not like, which is why milne se pehle destroy kar do. Is that kite flying, you think? Or could there be a shred of truth in that? You know, BJP's politics relies so much on theatrics that they have made their justice system also revolve around it. I mean, you remember Bobby Deol's dialogue in one of his movies where he says, no FIR, no report, faisla on the spot. And they are literally following that. You know, if we don't get to know the name of the VIP for whom Ankita was being forced into prostitution and the other girl who went missing a few years ago, because I'm sure there are other victims as well. You know, these are very crucial questions. If the truth doesn't come out, then the entire act of suspension or, you know, this bulldozing of illegal resort are nothing but a hoax, just to create headlines, as you rightly said. That's why I personally feel that a court-monitored probe is required for the whole picture to come out. And secondly, Shreya, keeping the politics aside, I speak on behalf of the parents who send their girls for employment opportunities, you know, in other places. There is a rampant increase in sex tourism in India, and places like Goa and Uttarakhand are, you know, they are becoming unsafe for girls with mushrooming of spa and massage parlors, and, you know, especially in such receptionist jobs kind of things. It is high time we strengthen the provisions of Sexual Harassment at Workplace Act, which we enacted in 2013 after the Vishakha guidelines. Also, you know, as the number of women... She's only 19 years old. She's only 19 years old. She's come to work. She lives in a village. Her parents live in a village which is in a forest. She's come to work. She's supporting her family. She's trying to do an honest job. And here's the son of a politician pushing her into prostitution. When he couldn't do that, he just pushes her to his death. Now, question is, was this bulldozer action required? Has it managed to erase evidence? That is what Yashovardhan Azad is saying. Talishre, I'll give you the last word here. What do you make of the entire sequence of events that has played out? From the fact that the father says the police wasn't willing to register a complaint, to the fact that it took so many days for the body to be, you know, fished out from the canal, to the fact that now the resort, which is the scene of the crime, has been razed. Yeah, so, you know, I will actually just echo what the previous panelists have said, as Mr. Azad said. One of the things about Evidence Act is that what is evidence? You see, when there is a report that goes in and it goes to the court will actually look at hard evidence. That's why we have an Evidence Act. And without any proper evidence, what happens is that decision making becomes very arduous. Now, we know in real time the situation where our courts of law are concerned, there is massive amount of pendency. So by the time it actually comes down to the final hearing where the evidence would be looked into, at that point in time, it's very important not just to put in circumstantial evidence. Now, where this particular issue that is today that we are dealing with, okay, to take it step by step, one, the delay that's there, that again is something that has to be answered by everyone involved in the stakeholder system, whether it is the police, whether it is the criminal justice system, whether it is looking at the local political scene, whether it's just looking at the democratic right of a woman to come out and earn. The second is about raising a building which is there in terms of the scene of crime, so to speak. She worked there. What was the hurry that was there? It smells very strange. Fishy. Because it smells very fishy. I agree with you. If the picture that was sent was to convey that this is instant justice that is taking place, it has certainly boomeranged for the Uttarakhand BJP. सुरेश जोशी जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं. नमस्कार. शो का आखिरी है, लेकिन सारे पैनलिस्ट ने अपनी बात की है और जो तीनों पैनलिस्ट हैं एक ही बात बोल रहे हैं. बुलडोजर चलाने की क्या जल्दी थी? हाँ, बीजेपी को शौक है कि हर जगह वो बुलडोजर चला देती है, लेकिन इस केस में ये जो जगह है, ये जो रिजॉर्ट है, ये तो सीन ऑफ क्राइम था ना, ये तो एविडेंस है. यहाँ पे तो एविडेंस था. इतनी जल्दी क्या थी बुलडोजर भेजने की? और भेजना था तो आज से 6-7 साल पहले भेजना था, जब वो रिजॉर्ट बना था. इलीगल था ना वो, तो तभी भी इलीगल है और आज भी इलीगल है. नहीं, पहली बात तो मैं देखो आपको ये बतलाऊं कि इस केस में अभी तक जो भी एविडेंस हमको चाहिए थे, चाहे अपनी फॉरेंसिक के हों, चाहे पुलिस के हों, और जो हमको काम वहां पर करना चाहिए था सरकार को, वहां पर को रेणुका जी जो है कि एक बहुत अच्छी कुशल जो है आईपीएस अधिकारी हैं,
उनको उसका इंचार्ज बनाया गया है। और साथ ही साथ जो है कि आज तक जब आप और हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन जिन्होंने अपराध किया है उन अपराधियों को सजा देने के लिए जो पुख्ता सबूत वहां पर को इकट्ठे किए जाने थे वो सारे सबूत इकट्ठा किए गए हैं। और उस जिस कमरे की बात आप बार बार कर रहे हैं उस कमरे के वीडियोग्राफ्स जो आज आपको टूटी हुई कुछ चीजें दिख रही हैं वो सारे साबूत जिसमें कमरा था उसके सारे एविडेंसेज वीडियोग्राफी के द्वारा और फॉरेंसिक टीम के द्वारा लिए जा चुके हैं। जैसे हमारे पुलिस अधिकारी पौड़ी ने भी अवगत कराया है वो आपके चैनल से चल रहा है। और साथ ही साथ देखिए इस समय सरकार की पूरी हमारी जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि जिसने अपराध किया है एक ऐसी नजीर ये सरकार पेश करना चाहती है फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को ले जाके कि उन अपराधियों को अंतिम सजा मिले। उत्तराखंड की बेटी के साथ बहन के साथ या इस देश की बेटी और वो सब ठीक है कृत्य करने का कोई सोच भी ना पाए। नहीं जोशी जी वो सब बात ठीक है, गुस्सा हम सब में बहुत है और बहुत चीजों को लेकर है इस केस में हम सबको गुस्सा। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं फिर सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप जवाब आपने ठीक है जो आपने अपनी तरफ से बात रखनी थी आपने रखी, लेकिन सवाल मेरा सिंपल था, बुलडोजर चलाने की जल्दी क्या थी? ये सीन ऑफ क्राइम है, यहाँ पे एविडेंस है। कौन सी पुलिस फोर्स ऐसी होती है जो क्राइम का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, क्राइम सीन पे बुलडोजर चला देती है? आज हरीश रावत ने तो ये तक बोल दिया है कि इस रिजॉर्ट में कुछ ऐसा एविडेंस है जो सीधे बीजेपी के कुछ नेताओं को के साथ जुड़ रहा है। देखिए मैं प्लीज देखो मैं बड़ी रिक्वेस्टफुली आपसे कह रहा हूं, मैं इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता। हमारे पास राजनीति करने का बहुत वक्त है, अभी हम आगे राजनीति करेंगे। हरीश रावत क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, अन्य लोग क्या कह रहे हैं, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है उस बेटी को न्याय दिलाना जिसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है। लेकिन बुलडोजर चला के न्याय कैसे मिलेगा? बुलडोजर चलाने से न्याय मिलता तो इस देश में सबको न्याय मिल गया होता अब तक, अगर इतना आसान होता न्याय मिलना। न्याय मिलने के लिए एविडेंस चाहिए जोशी जी। हमारे पास एविडेंस हम इकट्ठे कर रहे हैं, सरकार उस पर प्रयासरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट उस पर बिठाई जा रही है, अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ लगाया गया है। जो अधिकारी कहीं पर को जिन्होंने गलत किया होगा वो भी दंडित होंगे, लेकिन सारे प्रूफ सारे एविडेंस भी मिलेंगे और न्यायिक प्रक्रिया में जब मामला जाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विश्वसनीयता से इस बात को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कृत्य किया, जिन्होंने अपराध किया है, निश्चित तौर पर कानून की अंतिम सजा उनको मिलेगी और ये पूरा देश देखेगा। मैं यशोवर्धन आजाद को लास्ट वर्ड दूंगी। मैंने आपकी बात सुन ली जोशी जी, आप मुझसे कह रहे हैं कि बुलडोजर चला सारा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद। यशोवर्धन आजाद, व्हाट मिस्टर जोशी इज आल्सो सेइंग इज दैट द एंटायर रूम दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हैज बीन वीडियोग्राफ्ड। इज दैट इनफ? Himself will never be able to say if enough evidence has been collected for the case, and so that is one. Number two is, how is it complete evidence? This is only a backup evidence which had to be used as a supportive evidence for the primary evidence which they would have got from interrogation by taking the accused to the spot. And the most important thing, Shreya, that's why you forgot asking him this, that why was the police remand not taken? Correct. You know, Joshiji is speaking with a lot of good intent. I accept that. He spoke on another channel also in Hindi with me. But the question is, we have lost this precious time. And why the local police did not behave the way it was supposed to be behaved. बोलिए जोशी जी, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं ली? बोलिए, पूछिए, जवाब दीजिए। देखिए मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पुलिस के आप तो खुद डीजीपी रहे हैं, आप पुलिस की कानून की व्यवस्था को, क्या देश का कानून है, क्या सिस्टम है, क्या धाराएं हैं, सब आप जानते हैं। मेरी जो जानकारी में है, मैं मेरे साथ अभी एक दूसरे चैनल पे भी आप थे, मेरी जानकारी के आधार पर पुलिस उस पे आज रिमांड ले चुकी है। कितने दिन बाद? मैं यही बात कह रहा था। नहीं जोशी जी, देखिए मैं आपको जोशी मैं ये कह रहा था जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यही मैंने पिछले चैनल में भी कहा था कि अब फिर से रिमांड लेना बहुत आवश्यक है। वो रिमांड उन्होंने ले लिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि वो 7 दिन की जो देरी हुई है,
इसके लिए आवश्यक है कि आप वो अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ आपको 201 का एविडेंस प्रस्तुत करके उनको चार्जशीट करना चाहिए। जोशी जी बड़े फेलियर्स देखिए, रहे हैं। मान लीजिए कि इस बार उत्तराखंड सुनिए। एडमिनिस्ट्रेशन से इस केस को डील करने में बहुत फेलियर रहे हैं। पहले तो 3 घंटे बेटी के पिता के आपने कंप्लेन नहीं रजिस्टर की, उसके बाद जो सीन ऑफ क्राइम है बुलडोजर चला दिया। देखिए बुलडोजर चलाने का एक समय होता है, ये वो समय नहीं था। गलती हुई है, गलती हुई है, मानिए। देखिए सुनिए, देखिए मैं पहली बात आपको बतलाना चाह रहा हूं कि इस समय जो देखो हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी इस समय जो आवश्यकता है वो ये है कि हम सारे एविडेंस को इकट्ठा करके, पुलिस हमारी अच्छी तरह से काम कर रही है। अगर हमको सुनिए हमको अदर्स भी कोई एजेंसीज की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है मतलब कि आप हम कह रहे हैं अदर एजेंसीज का भी सपोर्ट लेंगे। मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। में भी केस को ले जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इस समय ये है कि एनी हाउ एनी कॉस्ट उस बेटी को, भारत की बेटी को, उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिले, और जिसने वो दरिंदगी कर रखी है, जो अपराधी है, उस अपराधी को किसी भी कीमत पर जोशी जी न्याय बुलडोजर चलाने से नहीं मिलता, न्याय एविडेंस के बेसिस पे मिलता है। और क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय, बुलडोजर ने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है? यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं कि ऐसा इंटायरली पॉसिबल है। जोशी जी समय खत्म हो गया, लेकिन आपने अपनी बात रखी। आप थोड़ा सा देर में जुड़े हम लोगों के साथ, क्योंकि सवाल आपके लिए बहुत थे, लेकिन जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू थैंक ऑल आवर गेस्ट्स दिस इवनिंग। इज द स्टोरी ओवर? फार फ्रॉम ओवर। तन्वी, थैंक यू वेरी मच. Yashovardhan Azad and Talishre, thank you very much for joining us on Urban Debate this evening. With that, it's a wrap from me. Good night. I'll see you once again tomorrow, same time. Do stay with us.